वेलकम टू प्रत्युष CHSE क्लासेस को मु स्वागत करुच्ची प्रत्युष। टुडे विल डिस्कस अबाउट बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध वाज द फाउंडर। ओके, बुद्धिज्म ऊपर आम आज डिस्कशन करवा। तो बुद्धिज्म, ओके, बुद्धिज्म। सिद्धार्थ also known as Gautam. Siddhartha also known as Gautam was the founder of Buddhism, जे कि गौतम बुद्ध जे कि बौद्ध धर्मर फाउंडर थिले। was born about 2500 years ago. Father Shuddhodhan, mother Mahamaya ba Maya Devi. Okay, the Buddha belonged to a small gana known as the Sakya clan, and was a Kshatriya. After his mother died 7 days and was raised by his aunt. After his mother died, तांको जन्म देला परे 7 दिन परे तांकर मांकर मृत्यु होइथिला, his birth. After his mother died 7 days and was raised by his aunt गौतमी को द्वारा जेहेतु से लालन पालन होते से कहला गौतमी पुत्र। ओके, गौतम मध्य रखा जाता। एट द मिडिल एज ऑफ 16 he was married to Yashodhara and Rahul was his son. एवं तांकर गोटे पुत्र हला, से पुत्र ना राहुल। ही ऑब्जर्व्ड 4 थिंग्स, से 4 गोटी दृश्य को देखी थिले। लाइफ ऑफ द बुद्ध, ये 4 साइट 4टी दृश्य, प्रिंस सिद्धार्थ एंड द 4 साइट्स। ओके, कौन कौन साइट गुडी को देखी थिले से ना, एन ओल्ड मैन। ओके, चित्र देखो, एन ओल्ड मैन, sick man groaning with pain, যন্ত্রণা সহিত সে খাসুচি। ओके, corpse bearing carried by people, गोटे शव लोक मान द्वारा बुहा हो जाउछि। ascetic who was in search of salvation, जे कि ध्यान, जड़े साधु। ओके, जड़े सन्यास। ओके, ये 4 गोटी दृश्य बुद्ध देखी थिले। When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. से तांगो गृह परित्याग करथिले काहेकि ना सत्यर संधान निमते। along with his charioteer छना, तांगर charioteer रथर सारथी छनांक सहित in search of truth, सत्यर संधान, सत्यर अन्वेषण निमंते, जोटा कहला ग्रेट रिन्यूएशन और महाभिनिष्क्रमण। ही पिनांस्ड हिज बॉडी फॉर 49 days अंडर ए पीपल ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ द निरंजना और फाल्गु रिवर। निरंजन नदी कूल से ध्यान मग्न हले सत्यर संधान निमंते। ओके, कंथक was the horse who accompanied Siddhartha in all important expeditions. The charioteer of Lord Buddha was known as Chana. Chana was the charioteer of Gautam Buddha. Okay. His teachers were Alarkalam and Udrak Ramaputra. He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. He finally decided to find his own path to realization and meditated for days under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment, जोठारे कि से ज्ञान प्राप्त होइथिले। After that he was known as the Buddha or the wise one.
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ହି ୱାଜ୍ ନୋନ୍, ସେ ବା ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ବୁଦ୍ଧ ବା ଜଣେ ବିଜ୍ଞ। ଓକେ, ଦେନ୍ he then went to Sarnath near Varanasi where he taught for the first time, जोटारे कि से प्रथमे शिक्षा देइथिले सारनाथ। He spent the rest of his life traveling on foot, आ तांकर बाकी तक समय rest of his life traveling on foot, पादरे यात्रा करुथिले, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, गोटे स्थान अन्य एक स्थान को जाउथिले, टीचिंग पीपुल, लोकमानंकु उद्बोधन दउथिले, लोकमानंकु तांकर बाणी प्रचार प्रसार करथिले, टिल को पर्यंत ही पास्ड अवे एट कुशीनारा बा कुशीनगर बा कुशीनारा, मृत्यु पर्यंत सेमिति विभिन्न स्थान परिवर्तन विभिन्न गोटे जगार अन्य गोटे जगह जाती एवं टीचिंग्स तांकर बाणी गुड़िक प्रदान करती विभिन्न लोकमानंकु गौतम बुद्ध। ओके, ए बौद्ध धर्म विषय। ओके, he died at the age of 80 in 486 maybe at the place called Kushinara ba Kushinagar, a town in UP. The event is known as Mahaparinirvan। ओके, तांकर मृत्यु को महापरिनिर्वाण, जो फर्स्ट टाइम से सेरमन देथिले सेटा टर्निंग हमर कहि परिबा धर्मचक्र प्रवर्तन। ओके, तो फोर मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल was held in 483 BC. It was held under the patronage of the king Ajatasattu and was presided by Mahakasyap, a monk. Location कोठी ना राजगृह। ओके, राजगृह। The teachings of Buddha were divided into 3 Pitakas in the council. It was held soon after the Mahaparinirvan of the Buddha, completion of Sutta Pitaka and Vinaya Pitaka by Upali द्वारा 2टी पिटक लिखा जाइथिला, सुत्त पिटक विनय पिटक। ओके, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल was held in 383 BC. It was held under the patronage of King Kalashoka in 383 BC and presided over by Sabakami. Location which Vaishali, first Rajagriha Sarnath, second Vaishali. Division into Sthaviramadins and Mahasangikas. These 2 groups would eventually evolve into Theravada and Mahayana Buddhism. This council rejected the Mahasangikas as colonial Buddhist text. Second Buddhist council, third Buddhist council was held in 250 BC. It was held in Pataliputra under the patronage of King Ashoka and was presided over by Moguliputta Tissa, completion of Abhidharma Pitaka. Okay, the sacred book of Buddhism, Tripitak, तीनोटी पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक, सुत्त पिटक। तो फर्स्ट काउंसिल बेले लिखा जाइथिला एवं थर्ड काउंसिल लिखा हला अभिधर्म पिटक। ओके, डिसीजन टू सेंड मिशनरीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विभिन्न स्थानों को पठागला। अशोक सेंट सेवरल ग्रुप्स टू डिफरेंट कंट्रीज टू व्हाई टू स्प्रेड बुद्धिज्म। बौद्ध धर्मर एते प्रचार प्रसार जाइकी चारिआडे जाइकी कर आहरी जेमिति प्रचार प्रसार होई परिबे, लोक माने जेमिति बौद्ध धर्म को आहरी लोकप्रियता बढ़ाइबे। ओके, after this council, after which council? Third Buddhist council. Okay, fourth council, it was held in 72 AD at Kundalavana, Kashmir. It was presided over by Vasumitra, while Ashokas was his deputy under the patronage king of Kanishka of the Kushana Empire, Kanishka. Division of Buddhism into Hinayan
the lesser vehicle, and Mahayan, the greater vehicle. Abhidhamma text were translated from Prakriti to Sanskrit. Okay, then next three Pitakas जोटा कहले विनय पिटक सुत पिटक एवं अभिधर्म पिटक कंसिस्ट विनय पिटक कौन ना कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड कंडक्ट ऑफ द डिसिप्लिन applicable to the monastic life of the monks and nuns. Consist of rules and conduct. Okay, Sutta Pitaka consists of the main teaching मुख्य बाणी गुड़िक and the Dhamma of बुद्धंकर बाणी गुड़िक वर्णना कराई. It is the divided into 5 nikayas or collections. Okay, दीघ निकाय, मझिमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय. अभिधर्म पिटक philosophical analysis and systematization of the teaching and the scholarly activity of the monks. Jatak folklore stories related to the birth of Buddhism of Buddha in Chinese, they are called Shodak. Jatak Kathai was part of Abhidharma Nikaya. Okay, some places were associated with Buddhism. Five we'll discuss. कहीं किसी प्लेसेस गुड़िक किसी बुद्धिज्म बौद्ध धर्म सहित कहीं किसी स्थान गुड़िक जोटा कि दिए स्थान गुड़िक संपर्कित थिला से स्थान गुड़िक कहीं बुद्धिज्म सहित बौद्ध धर्म सहित कहीं संपर्कित थिला आसंत आम बर्तमान आलोचना करवा. तो लुम्बिनी इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध. लुम्बिनी गोटे स्थान ना कहीं बौद्ध धर्म सहित संपर्कित ना इट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध. बुद्धंकर ये हूँ जन्मस्थान. एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ बुद्ध लुम्बिनी वाज ए पार्ट ऑफ शाक्य जनपद. तांकर जन्म समय लुम्बिनी वाज ए पार्ट ऑफ शाक्य जनपद. शाक्य जनपदर लुम्बिनी गोटे पार्ट थिला व्हिच वाज ए रिपब्लिक. देन राजगृह was the clearly capital of Magadha Janapada, which was ruled by Bimbisara during Buddha's time. Okay, after Mahabhinishramana, Buddha first went to Rajgir. King Bimbisara had offered Buddha his throne, which he turned down. Okay, then Vaishali. At the time of Buddha, Vaishali was in Bhaji Janapada. After leaving Kapilavastu for renunciation, he came to Vaishali first and had his spiritual training from Alara and Uddak. Alarakalam and Uddak Ramaputra. Next places, Bodhagaya, why associated with Buddhism? Bodhagaya was known as the Bodhimanda, Urvillo, Sambodhi, Vajrasana, and Mahabodhi. It was the Mahabodhi temple and Bodhi tree. Buddha attained जो स्थान रे कि बुद्ध ज्ञान प्राप्त होइथिले. ओके, बुद्ध attained enlightenment at Bodhagaya in Bihar. Okay, Sarnath why associated with Buddhism? Sarnath is where Gautam Buddha delivered his first sermon. जोठारे कि गौतम बुद्ध प्रथमे तांकर धर्मवाणी देइथिले और धर्मचक्र प्रवर्तन जोटा कहिथिली तांकर धर्मचक्र प्रवर्तन बा जो तांकर प्रथम वाणी प्रवर्तन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाए. ओके, तेबे धर्मचक्र प्रवर्तन at the time of Buddha it was a part of Kashi Janapad. Next, Sravasti. It was located in Uttar Pradesh. Most of the monastic life of Buddha was spent in Sravasti. In Buddha's time, Sravasti was capital of the Kosal kingdom. Sravasti is also the birthplace of Jaina Tirthankar
Shambhavnath. Okay, the Kushinara, the another name was Kushinagar. It is the site of Buddha's death. 5. Kushinara or Kushinagar is associated with Buddhism because Kushinara was the death place of Buddha. Okay, it is the site of the Buddha's death and महापरिनिर्वाण तांकर मृत्यु कौन कहगला महापरिनिर्वाण घर छाड़ी आस सत्यर सन्धान निमते घर छाड़ी आसवा कहगला कौन कहगला घर छाड़ी जिते से सत्यर सन्धान निमते आसिले महाविनिष्क्रमण जिते धर्मवाणी प्रचार करले तो धर्मचक्र प्रवर्तन ओके तांकर मृत्यु कहगला महापरिनिर्वाण एट द टाइम ऑफ Buddha's death it was the capital of Malla Janapada. At the time of Buddha's death it was the capital of Malla Janapada. So today's class तो आज आम जहाँ भी डिस्कसन कले आपण मन किपरि लागिला कमेंट माध्यम निश्चित जनइबे यार पीडीएफ मध्य आपण माने टेलीग्राम चैनल रु पाई परिबे ओके प्रत्युष एचएससी क्लासेस सर्च कले आसी जीवो तो आपण सांग मानक मध्य शेयर करंतु इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स मानक पई पीडीएफ मध्य रही अछि ओके तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब share more and more to with your friends. Okay, thank you.